So Maxwell's equations in medium. Okay. If I write Maxwell's equation in a medium, then what are the equations? Del dot D is equal to 0. Del dot B is equal to 0. Del cross E is equal to minus del B by del T. Right? And del cross H is equal to, what was that? Del D by del T. This will be your Maxwell's equation, and B will be equal to mu times H, and D will be equal to epsilon times E. Correct? Yes, sir. This will be the Maxwell's equation, and because of the medium, mu naught will be replaced by mu, epsilon naught will be replaced by epsilon. Okay? अब एक बार जरा सर एक 1 by mu r एप्सिलॉन r नहीं होगा del d by del t तो वो एडजस्ट हो गया ना. Suppose you have del cross B is equal to here कह रहे हो this side. yes So let us check. Del cross B is equal to mu naught epsilon naught del 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 E by del T, del by del t yes and because of the medium, put it mu and epsilon. Okay. So now take this B by mu here. It will become del cross H, and take epsilon here. It will become D by dt. Okay. Okay. Understood? yes sir Okay. So with this, again I will apply this. Wahi purana wala. I will apply del cross E. Okay. This side will become del cross B. And from here del cross B, I will reuse it and make wave equation. So itna symmetric hai, you don't have to do it. You just write it. Del square E minus, what was that time? 1 by C. 1 by mu So 1 put by V 1 by V square del 2 del t del 2 E by del T2. Just put it like this. Make it symmetrical. Okay. And del square B is equal to 1 del square B minus 1 by V square del 2B by del T2 is equal to 0. So see the symmetry, how the equation translates. And just V is your new V, that is C by N. Okay? Yes, And sir. N is your, it is new epsilon by epsilon mu. Epsilon R mu R. And epsilon R is epsilon by epsilon naught. Epsilon naught. And mu R is mu, epsilon by epsilon naught. Mu R is mu by mu naught. देखो कितना symmetric है सारी चीजें. Yes? Yes, sir. Now velocity has changed in the medium. You can see जो wave velocity थी, that has decreased in the medium because n will be in most of the cases greater than 1. This is called refractive index. Is that okay? Yes, sir. Abhi, what will happen that your this thing will modify, energy densities will be modified, but it is so simple to write them.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखूं तो पहले क्या थी और अब देखो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, राइट? This is electrostatic energy. Magnetostatic energy will be 1/2 mu p square. Are you getting it or not? Yes, sir. The pointing vector, which is the power, which is intensity actually, power per unit area leaking out of the surface, that will become 1/2. क्या हुआ करता था? E cross cross B. Yes. So you can write it as E cross H. Yes or no? Yes, sir. You can write it E cross H straightforward. And this is also called intensity. इसको क्या कहते हैं? Because it is power per unit area. So that's why it is also known as intensity. Right? Yes, sir. So अगर मैं इस पॉइंटिंग वेक्टर को कैलकुलेट करके लिखूं नए तरीके से, so what will happen? I पहले क्या हुआ करता था? चेक करो. 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, C की जगह V और E नॉट स्क्वायर हुआ करता था. is This will be Yes, check. sir. This will be your new intensity. It is average pointing vector. I क्या है? Average Average. pointing vector. So everything whatever you had in vacuum, इसीलिए सिर्फ vacuum वाला करने की जरूरत है. बाद में you don't need to solve. Just write it by symmetry, and that is the beauty of electromagnetics. ये बाकी सब्जेक्ट्स में इतनी सिमिट्री के साथ नहीं आता. जैसे मैंने शुरू में इसीलिए बताया था, why this subject is inspiration to all the subjects, right? Yes, इस sir. सब्जेक्ट में जो जो नई चीजें आएंगी, they will Yes, sir. just fall in place, बिल्कुल symmetrically. Is this okay? सर हम्म. वो जो हम प्रीवियस क्लास में ना डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू 1/μr एप्सिलॉन आर डो डी बाई डो टी लिखा था. तो यहाँ तो सिर्फ डो डी बाई डो टी है. What, Dodi? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू This one. यस सर. Del cross H is equal to. So in the previous class we have written 1/μr epsilon r dou d by dou t. That's the equation. Del cross H is equal to. Yes sir. So this time I have derived it. See, from del cross B I have derived it. Yes. So What this is the the formula, right? confusion? सर वो See, वहाँ यहाँ पे μr epsilon r का था. मैंने यहाँ से शुरू किया. देखो, डेल क्रॉस बी, यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, होता है. मीडियम में म्यू एप्सिलॉन होगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर नहीं होगा, बिकॉज वो तो डायमेंशनलेस होता है. डायमेंशंस तो हमेशा सही होंगे ना? यस Yes और sir. नो? Yes sir. तो म्यू और म्यू नॉट का डायमेंशन सेम है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन सेम है. दैट्स व्हाई दिस रिप्लेसमेंट विल हैपन इन द मीडियम. और यहां पे वेलोसिटीज में यू कैन राइट, सी यहां पे v स्क्वायर लिखा हुआ है. सो इफ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट इट लाइक दिस, डेल स्क्वायर e माइनस म्यू, यहां पे क्या होता था? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट? yes पहले देखो फ्री वेव में क्या आया था? हेयर Yes, sir. क्या आया था? mu not epsilon म्यू नॉट. epsilon not. तो यहाँ पे ये आ जाएगा. यस और नो? Yes sir.
Yes, sir. So your velocity will become 1 upon under root mu epsilon. This is your new velocity. पहले क्या हुआ करती थी? C is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught. देखो बाकी लोग भी देख लो भाई. Did I make some mistake in last class? हो जाता है कई बार. सर लास्ट क्लास में एक एक्सप्रेशन लिखा था डेल क्रॉस एच का. हाँ. डेल क्रॉस एच इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होल मल्टीप्लाइड बाय डेल डी बाय डेल टी, जिसकी जगह अभी आपने डेल क्रॉस एच इक्वल टू डायरेक्टली डेल डी बाय डेल टी लिख रखा है. यहाँ पे मैंने मैक्सवेल्स इक्वेशन चौथी वाली जो लिखी थी उसके बारे में बहुत बात कर रहे हो. यस सर. तो उसको करेक्ट कर लो भाई. प्लीज सी दिस इज परफेक्टली ओके. और मैंने डिराइव भी कर दिया. अगर बाई चांस गलती से कुछ लिख दिया हो तो. अगर मुझे वो लिखना है म्यू और एप्सिलॉन तो मैं ऐसे लिखूंगा कि देखो लेट मी शो यू. सपोज मुझे बी लिखना होता डेल क्रॉस बी. वो क्या होता है? म्यू नॉट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेली डेल टी. डेल ई बाई डेल टी. ये होता है. तो अगर मुझे 1 अपॉन में लिखना है, हाँ, तो मैं ये चीज इधर ले जाऊंगा ना. 1 बाई म्यू एप्सिलॉन डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल टी. यस और नो? ओके. और उसके बाद आई विल just use this b by mu, so it will become del cross h, and I will use epsilon this side, it will become del d by del t. Now this is okay. यस सर. पिछली बार मैंने डिराइव नहीं किया था. किया think था मैं- सर. हाँ सर, आपने सर बी को म्यू एच लिखा था इक्वेशन. बी को हाँ. म्यू एच था और ई को डी बाई इप्सिलॉन. तो फिर कैसे गलत हो गया? फिर तो यही आएगा ना. आई थिंक मे बी बिल्कुल लास्ट था और जस्ट ओके. भाई अभी तो वही कर रहा हूँ. 1 अपॉन म्यू आर का फैक्टर आ रहा है. यस. 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर ऐसा फैक्टर आया था लास्ट टाइम भी रख गया था. तो Yes, कैसे? sir. प्लीज सी ना. एक मिनट रुक जाओ. Yes. So we have done everything for this case also, and if there are two boundaries and the wave travels from boundary 1 to boundary 2, then the same boundary conditions epsilon 1 perpendicular, ये पहले ही बताया है मैंने, is equal to epsilon 2 perpendicular, because this time you have medium here, epsilon 1 mu 1 here and epsilon 2 mu 2 here. So these boundary conditions will also work. B1 perpendicular will be equal to B2 perpendicular. This is first one, this is second one. Third one is E1 parallel is equal to E2 parallel. And fourth one will be B1 parallel by mu1 minus B2 parallel by mu2 is equal to 0. So I mean they are also equal. So when a wave travels from one medium to another medium, then these boundary conditions will follow. We will use them while solving some questions. Okay. सर Hmm. सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट कैसे इक्वल हो? Because अभी आप कोई चार्ज या कोई चीज ले नहीं रहे हो ना. Only wave is traveling. So please write before this that
what happens when the wave travels, when a wave travels from one transparent medium to another transparent medium, to another transparent medium. ओके अगर तो ये कुछ इस टाइप का है जैसे कि एयर टू वाटर, ग्लास टू प्लास्टिक, समथिंग लाइक दिस. सो ये यूज करके हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस ये सब निकालेंगे. बट पहले आई वांट टू डिस्कस व्हाट हैपेंस व्हेन द वेव ट्रेवल्स इनटू द मीडियम व्हिच इज अ कंडक्टर, क्योंकि अभी फ्लो बना हुआ है. समझ गए ना सोटन? yes, There sir. is no charges involved on the surface. There is no current involved in the surface. Just plain electromagnetic wave comes and goes. So what will happen? This is incident one. This is the transmitted one. This is the reflected one. Incidence, reflected, transmittance, all those components we can calculate. So that will depend on the mediums. What will happen with them? Okay. yes, sir. सर एक डाउट है, हाँ. राइट हैंड साइड में तो डेल बी डेल टी है, हाँ. तो मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ कोई चेंज हम नहीं ले रहे. सॉरी, किस केस, क्या मैक्सवेल इक्वेशन में कह रहे हो? थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन. यस सर, कर्ल ऑफ क्या? E इज इक्वल टू कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल बी डेल. हाँ, सर उससे ही तो ये पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है. जो ये और फेराडेज लॉ और ये एक्ट कर रहा है, डेल डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी. ओके, सो हाउ द वेव इज ट्रेवलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, and this is magnetic field. Okay, so this is electric field, this is magnetic field. So time varying electric field is producing magnetic field. Time varying magnetic field is producing electric field. So that's why electromagnetic wave. Okay. Yes. So because of time varying electric field, this is the magnetic field that is produced, and because of the time varying magnetic field, this is the electric field that is produced. उसी को तो क्रॉस करके तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन बनाते हो ना, डेल क्रॉस ई, then you use this del cross b in the upper equation. Okay. Yes. So nothing else is present. No charge is present to give electric field. No J is present to give the magnetic field. Only time varying electric field is present to give the magnetic field, and time varying magnetic field gives the electric field, and they propagate in the medium with some velocity. Is it okay now? Yes, sir. Now let us see what will happen if. तो अभी तक बिल्कुल वैसा ही चल रहा है. सारी क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज गोइंग इन द सेम वे. करेक्ट? Yes. पिछले केस में एक चीज और लिख लो कि जो केसी बाई ओमेगा है वो भी बन जाएगा केवी बाय ओमेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Or if you want to write kv by omega, please understand this. So before it was kc by omega is equal to 1. This was the refractive index, correct? 1 was the refractive index. Now refractive index is n. Yes? Yes. So this side we have now kc by omega. Okay? So you can write c by n is equal to v.
So now kV by omega will be equal to 1. Okay, are you getting it? So this is in vacuum and this is in medium. तो ये लिखवाया था आपने? ये समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वेव के साथ हो क्या रहा है मीडियम में. तो अभी पहले वैक्यूम में चली तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ चली. अब जो है वेलोसिटी रिड्यूस हो गई बट फिर भी मीडियम था. तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर राइट नाउ, दैट इज एप्सिलॉन आर म्यू आर. ओके, this is just a number. For example, you can say for glass it is say 1.5. Okay, for water it is 1.33. These are the refractive index. तो water में light जाएगी तो C by 1.5 times slow हो जाएगी, C by 1.33 times slow हो जाएगी. और glass में जाएगी तो it will become C by 1.5, so it will slow down. So still not much is happening. But what happens when this electromagnetic wave goes into conducting medium? So now let us discuss electromagnetic waves in conductors. In conductors, okay? Electromagnetic waves in conductors. So now in conductor, what is going to happen is very, very interesting. Because in conductor, you have some free charges, correct? Yes, sir. And JF will be equal to sigma E. E is the electric field within the conductor. And the Maxwell's equation goes like del dot J is equal to rho F by epsilon naught. Del cross B is equal to 0. Del cross E, in case of conductor, Faraday's law we can apply, it will be minus del V by del T. And del cross B is equal to, क्या होता है? Mu naught J? Mu Yes, sir. naught J plus, One. sorry, mu J, Yes, sir. mu J plus mu epsilon del E by del T. Please see this. सही लिखा है मैंने? सर पहली वाली में भी एप्सिलॉन होगा. Del dot E. Del? Del dot E equals to rho F by epsilon. हाँ, sorry. Yes. Everything is written in the medium. In some medium. This time that medium is conductor. Is it okay now? Yes, sir. And let me replace this J by sigma E. Okay? Yes, sir. So these are the Maxwell's equations. Maxwell's equation. और सेम टाइम पे अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए continuity equation लिख लूं, if I write continuity equation, then what is continuity equation? Del dot JF is Plus equal del to del- minus del rho F by del T. Correct? Yes, sir. अब बहुत ध्यान से देखना. So the situation is like this, system is like this. You have electromagnetic wave and it encounters a medium that is conducting medium. Okay, it is now conducting medium, like conductor. Okay, the waves Yes, sir. was traveling from vacuum and now it encounters a medium that is conducting medium, and I want to see this, what is happening. So del dot J is this. Is it okay? Yes, sir. Now मैं ये रो F को समझना चाहता हूं.
what is happening with this. So JF is this sigma E. So can I use this for del dot E? Yes. So del dot JF क्या हो जाएगा? Sigma del dot E. Yes or no? Yes, sir. This will be minus del rho F by del T. And what is del dot E? It is sigma by epsilon rho F is equal to minus rho F by del T. देखते रहना भाई. Is it okay? Yes, sir. And now del rho F by rho F is equal to minus sigma by epsilon del T. Correct? Yes, sir. And if I integrate, I will get ln of rho F is equal to minus rho by epsilon T plus K. Yes, sir. Yes. Let at T is equal to 0, rho F is equal to rho 0, some initial charge. Then K की value निकल आई. This will act as an initial condition. Yes, sir. So rho F will become rho naught e to the power minus sigma by epsilon T. This will be the profile of charge density in the conductor. एक बार चेक कर लेना. देखो समझ आ रहा है सबको? Yes. So I will have to erase whatever is written. Is it okay? Okay. Okay. So now ये जो charge density, free charge density. सर सर ये नीचे रो एफ इक्वल टू रो नो ब्रैकेट में क्या लिखा? Rho F is equal to rho naught initial charge. यहां से यहां कर लोगे या नहीं? यस सर हो गया. लॉग आएगा फिर लॉग को वापस. ओके यस अब देखो this is very interesting now. You are saying that rho of T is equal to rho 0 e to the power minus sigma by epsilon T. यही तो कह रहे हो? Yes. And because exponential में everything has to be dimensionless, so that means it should be rho naught e to the power minus T by tau.
because this has to be dimensionless. So that means there is a time scale given by epsilon by sigma. Is it okay? This time is a characteristic time. Characteristic time. Now coming to this equation, if you have a bulk conductor, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, and if I try to give an initial charge here inside the conductor, that charge will exponentially die out. You can see this, because that charge will rush towards the surface. That charge will rush towards the surface. So in the bulk, if you see, that charge will just die out. This is suppose some initial charge that is given. And ये बताओ कि ये time जो है, ये tau, if tau is large, if tau is small, अगर tau छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी जल्दी खत्म होगी या देर में खत्म होगी? जल्दी खत्म होगी। जल्दी खत्म होगी। बिकॉज यहाँ वाला कोफिशिएंट जितना बड़ा होता है उतना ही जल्दी ये फंक्शन तेजी से इट डाइज आउट. सो इफ टाउ इज स्मॉल दैट मींस इट इज अ गुड कंडक्टर. तो कंडक्टर की पहचान इससे भी कर सकते हो कि कोई चार्ज दो, कितना जल्दी चार्ज गायब हो जाए बल्क में से और सरफेस पे चला जाए. एंड यू कैन सी टाउ इज epsilon by sigma. Yes or no? So good conductor means sigma is very, very large. Bolo bhai. Yes, sir. So if sigma is large, tau becomes small and the charge density falls very, very quickly. तो अगर आप जितने अच्छे कंडक्टर लोगे उतना ही जल्दी चार्ज डेंसिटी जो बल्क में है वो टाइम के साथ खत्म हो जाएगी. सो अगर कोई चार्ज तुमने यहां दिया, इट विल इमीडिएटली रश टुवर्ड्स द सरफेस एंड बेटर द कंडक्टर, स्मॉलेस्ट टाइम इट विल टेक from to move from bulk to the surface. For ideal conductor, sigma is supposed to be very large, so almost no time will be taken for the charge to move to the surface. इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल कंडक्टर में कोई भी फ्री चार्ज रिसाइड नहीं करता, because of this time scale being very, very small. Yes? Yes, sir. सर Yes? ये जो हम यहाँ टाउ मतलब स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं ना, तो मतलब टाउ क्या है? टाइम कंसिडर कर रहे हैं क्या? मतलब टाउ का वैल्यू हमें टाइम ले रहा है क्या? ये तो मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी बता दिया है. You should not ask this. Are you asking what is tau dimensionally? Yes, sir. What it can be? Can it be anything except time? Anything in physics, if you write exponential, sine, cosine, tan, log, whatever you write inside has to be dimensionless. Yes or no? Yes, sir. In physics, you can't have anything written in these quantities and having a dimension, because they are infinite series with increasing power.
So dimensionally it will become inconsistent. So if this is time, so this should be inverse of time, so that both multiplication of both become dimensionless. ये तो मैंने बता ही दिया already. I've already told that. ओके सर, आप समझ रहे हैं. So because it is depending on conductivity and permittivity, so it becomes property of the conductor. So this tau becomes property of the conductor because it is depending on what? Epsilon and sigma. So better the conductor, smaller will be the tau because greater will be the conductivity. Okay. Yes, sir. सर मेरा एक डाउट है सर, Hmm. इसमें कंडक्टर के अंदर Hmm. पहले से ही तो चार्ज 0 है, मतलब इनसाइड. तो क्यों जीरो है वो? It is because of this reason. ये तो पढ़ ही रहे हो कि जीरो है, but at some point of time you have to understand that, ना? यस सर. Okay. So even if some charge is there, it is bound to go to zero in a smaller time. So if I don't study the conductor during that time, क्योंकि that will take some time ना, whatever is that time. So मैं उस time के बाद की study कर रहा हूँ. So how my Maxwell's equation after long time अगर मैं देखूं, how my Maxwell's equation will look like, it will be del dot E is equal to 0. Yes. Del dot B is equal to 0. Del cross E is equal to minus del B by del T, and del cross B is equal to, बोलो भाई, सर म्यू सिग्मा ई mu epsilon del E by del T plus mu sigma E. Okay. So we want to study the electric field when it enters into the conductor. Okay. And we will try to know what happens with that electric field. So these are the equations. So Yes. again, the situation is same, the electromagnetic wave and this conducting medium. This is E comma B, and what happens here? This is a conducting medium. Conducting medium. This I want to know. Is it okay? Yes, sir. Up now a very, very important mathematical argument we will use. Otherwise, we have to, write the equations. थोड़ा difficult होगा. तो अभी हम क्या करेंगे? पहले थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि कैसे देखो मैथमेटिक्स और कॉम्प्लेक्स का यूज करके वी कैन बी वेरी वेरी सेफ. अभी सपोज मैं फिर से वेव इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, बताओ. डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ डेल क्रॉस बी. ये करना होगा. This side it will become minus del cross E, del square E is equal to this side minus del by del T of म्यू एप्सिलॉन डेल ई डेल टी mu epsilon del E by del T plus mu sigma E. Correct? So what will be my equation? That will become del square E. बोलो भाई.
This cancels. Del Mu epsilon del Del 2 E by del T2 plus mu sigma Del 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 E by E del by T. del T। पहले वाली से फर्क नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Because you have included this term, right? J term. Just to study what is happening with the electric field. अभी इसका solution कैसे लिखा जाए? How to write the solution? So अभी मैं क्या करने वाला हूं कि I will consider the electric field like I considered with the field in vacuum or in the medium. So we will consider plane wave solution. Plane wave solution. मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डैम्ड वेव पढ़ाता हूं, अगर आपको याद हो। Yes. तो ये देखो, ये डैम्पिंग टर्म है कि नहीं? हाँ सर। Yes, भाई sir. ये डेल स्क्वायर ही है, तो मैं चाहूं तो वहां जाके और पूरा सॉल्यूशन कर सकता हूं, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं वेरिएबल सेपरेबल बनाऊंगा और सॉल्व कर दूंगा, ओके। बट उसकी जरूरत ही नहीं है। देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज करके मैं सिर्फ क्या करूंगा, ये जो डैम्पिंग टर्म आएगा, आपको याद हो, फिर वो अंडर रूट में जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आयोटा आ जाता है, राइट? Yes. आयोटा आ जाता है Yes, ना sir. उसको सॉल्व करते समय। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आई विल राइट दैट इसका सॉल्यूशन भी प्लेन वेव से कुछ बदला नहीं, पहले प्लेन वेव जैसा ही है। तो मैं लिख लूंगा E इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के टिल्डा Z माइनस ओमेगा टी। बस, फिनिश। दिस इज माई सॉल्यूशन। तो जो सारा चेंज आया है दैट आई हैव एब्सॉर्ब्ड इन के। आर यू गेटिंग इट? Yes. Yes, sir. जो प्लेन वेव सॉल्यूशन से अलग जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको मैं कॉम्प्लेक्स में ले जाके मैंने यहां एब्सॉर्ब कर दिया। अब सारा खेल इस के टिल्डा में है। व्हाट इज दैट? दिस के टिल्डा इज कॉम्प्लेक्स, नथिंग एल्स। और कुछ भी चेंज नहीं होगा, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। पहले वहां पे के क्या था? वैक्यूम में और मीडियम में इट वाज अ रियल। और जो चेंज आया इक्वेशन सॉल्व करने में, दैट आई हैव एब्सॉर्ब्ड इन दिस। सो के टिल्डा इज इक्वल टू सम के प्लस आयोटा कापा। ओके, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अब इतने के हो गए हैं, मैं इसको सोच रहा हूं बिल्कुल सिंपल लिख दूं, के टिल्डा इज k1 प्लस आई k2। थोड़ा पता चलेगा। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes. तो ये बात समझ आई कि कैसे बिल्कुल जस्ट प्लेन वेव के फॉर्म में ही लिख दिया। Yes, sir. Imaginary को absorb कर। सो बिकॉज ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिखो del 2 e बाई del z2 सपोज plus mu e del 2 and then make it variable separable, solve it, so you will get that part, so you can combine them using complex analysis। तो देखो, ये तो मुझे याद ही था kz minus omega t, वो सारा पार्ट मैंने बस इसको k को कॉम्प्लेक्स बना के उसमें एब्जॉर्ब कर दिया। इज दैट ओके? Yes, sir. So that is the power of complex number, that now these quantities have become complex. Okay, this e naught, everything is now, so please write this. Now let us do the Fourier transformation again. Let us put it here or substitute this into this equation. So just substitute del square is equal to ik, Minus I के whole square. ik. This time you see this, na? The wave.
and this del by del t as I minus I omega. Let us do this. What will डेल होगा, डेल स्क्वायर del yes. So यहाँ put करना जरा. What will happen? Ik whole square is equal to mu epsilon minus I omega square plus mu sigma minus I omega, and this will become minus k tilde square is equal to mu epsilon. यहाँ पे क्या आ जाएगा? Minus Minus omega omega square, and here minus I omega mu sigma, and this will become k tilde square is equal to mu epsilon omega square plus iota omega mu sigma. See the power of this. Without solving the differential equation, you got this. So whole of the physics is in this propagation wave vector, which is constant, and this is the real part, and this is the image. This now tells the propagation. लिख लो. This tells the propagation and this tells the absorption. अभी बताऊंगा कैसे. This tells the propagation and this tells the absorption. अब ये देख रहे हो कैसे डिस्पर्जन रिलेशन निकल के आ गया. सारी फिजिक्स इसी में छुपी हुई है. Yes, sir. So once you start understanding the solutions, the complex analysis and what we are doing, so everything becomes very, very easy. Otherwise ये सब alien लगेगा कि what is happening. और जहां E लिखे हो E naught, ऐसे B लिख लो. B will be also B naught e to the power I. kz. Okay? लिख लिया. Yes, sir. और अब बस ये गलती मत करना कि ये क्वांटिटी क्या है, रियल या कॉम्प्लेक्स? E naught. हाँ, E naught real है. कॉम्प्लेक्स है यार. अब यही तो सब चेंज हो गया ना. Yes, अच्छा, sir. yes, 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 sir. जो तुमने मल्टीप्लाई किया उससे बस इतनी सी ही चीज चेंज हुई है. तो कहो तो हर जगह टिल्डा लगाऊं, हर जगह, या फिर एक जगह लिख लो दीज थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स. नहीं तो ये भी कर सकते हो इफ यू फॉरगॉट कि भाई ये सब कॉम्प्लेक्स है. ओके Yes, sir. Yes, sir. कुछ तो तरीका लगाओ शो करने का, या तो गोला करके लिख लो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है. ओके Sir, tilde ज़्यादा अच्छा है, sir. टिल्डा अच्छा है तो टिल्डा लगा Yes. लो. समझना ज्यादा बड़ा है भाई, समझ ज्यादा बड़ी चीज है. इतना भी लगा लो, नहीं तो फिर टिल्डा Yes, भी sir. सरदर्द होने लगता है टिल्डा टिल्डा देख के. Yes, sir. समझ आ रहा है तो सब ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो सब बेकार. अब भाई देखो, क्लास 11th वाला काम करना है. के क्या लिखा हुआ है? k1 प्लस आई k2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा म्यू सिग्मा. अब आपको समझ आ रहा होगा किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं. कंपेयरिंग, ये होमवर्क दे रहा हूं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट.
K1 क्या बताएगा? लिखा आपने या नहीं कॉपी में? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन। तो जो पहले K हुआ करता था वैक्यूम में और मीडियम में, that role will be played by K1. K2 एब्जॉर्प्शन। absorption. Let us see how. Okay, so if you see, if you compare, now you can do this a square plus b square plus 2ab यस। and then make equation comparing real and imaginary part. What is real part in this? म्यू K1 square minus K2 What is imaginary square part? equal ओमेगा म्यू। So when you compare the real part and imaginary part, then you get something like this. Please ये आप करना, मैं direct लिख दे रहा हूँ. So your K1 will become, that is the real part, it will become omega under root epsilon mu by 2 and under root of 1 plus sigma by epsilon omega whole square plus 1 to the power half. This is K1. And K2 will become omega under root epsilon mu by 2 and under root of this same thing 1 plus sigma by epsilon omega whole square minus 1 to the power half. Please check this. So here what we have, this quantity plus 1. Here what we have, this quantity minus 1. और K1 और K2 dimensionally अलग होंगे या same होंगे? पुनीत? dimensionally same होंगे. Same होंगे. Obviously दो complex number में add हो रहे हैं तो they are dimensionally same. Yes sir. So see, these two things are same. Yes sir. And then these two things are same, only plus 1 and minus 1. So this you can compare the quantities and get this. Is this okay? Yes sir. Yes. अब देखो जरा, वापस लौटते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोफाइल में. तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बोलता हूं, देन मैग्नेटिक फील्ड. What was the electric field? Electric field was E is equal to E naught e to the power I k tilde z minus omega t. Yes sir. E is equal to E naught e to the power I k1 plus I k2 z minus omega t. Nothing special. E is equal to E naught e to the power minus k2 z into e to the power I k1 z minus omega t. अब देखो जरा, पूरी फिजिक्स यही निकल के आ गई. प्लीज सी, मैंने कुछ नहीं किया. आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड k tilde is equal to k1 plus I k2. This is your, now k1 and k2 are real. भाई k1 k2 तो रियल है. Yes. Yes sir. k1 k2 are element of real number set. अब देखो ध्यान से कि अपने आप k2 एटीन्यूएशन कॉज कर रहा है. दिख रहा है? Yes Yes. sir. जैसे से z में प्रोपोगेट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस विल क्रिएट द एटीन्यूएशन. एंड k1 इज प्रोपोगेशन. यही तो मैंने पहले ही लिखवा दिया था. Yes sir. k1 Yes. is like your plane wave, propagation wave. So this is your well-known propagation term. This is your attenuation term. So now you can see
that if electromagnetic wave of say this kind enters into a conducting medium, so it has to attenuate. Yes or no? This is z direction. Yes, sir. Because there is a term e to the power minus k2z. k2 बड़ा होगा तो attenuation ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और देख लो, सिग्मा बड़ा होगा तो k2 बड़ा होगा। कंडक्टर का सिग्मा अगर बड़ा है तो फॉर गुड कंडक्टर्स sigma is infinite, so k2 is infinite, so even the wave can't dare to enter into the conductor. So that's why we say that in conductor electric field is zero. Are you getting it? Yes, sir. Yes. So ये statement आधा ही सही है, क्योंकि ना infinite सिग्मा होगा और ना ही, बोलो, इनसाइड में जीरो होगा। Zero. इनसाइड में जीरो आएगा। ओके और एक और बड़ी मजेदार बात है जो फिजिक्स वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे पहले बताओ कोई चीज अगर समझ ना आई हो तो, एनीथिंग विच यू कुड नॉट अंडरस्टैंड। Okay, very good. So let me just talk about this attenuation term. So this attenuation term is like this. It will just kill the wave like this. Yes or no? This is Z. This is e to the power minus k2 Z. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So if the wave travels a distance d, suppose, that means Z is equal to d. Okay? Such that this 1 becomes 1 by E. Are you getting it? The field profile. If it was 1, it becomes 1 by E. So that D will be what? That will be equal to 1 by K2. ये बात सबको समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. भाई अगर ये Z is equal to 1 by K2 हो जाए, तो that distance will make the wave reduce by E times. So this is called skin depth. ये वो प्रॉपर्टी है जिससे पता चलेगा वेव कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगी. दिस इज कॉल्ड Skin depth. स्किन डेप्थ. बिकॉज ये डिस्टेंस जितना ही कम होगा उतना ही कंडक्टर अच्छा होगा. आर यू गेटिंग इट? भाई अच्छा कंडक्टर मींस ज्यादा सिग्मा मींस बड़ा K2 मींस छोटा d. Large sigma means large K2 means small d. That means it will be very, very difficult for an electromagnetic wave. If the conductor is very, very good, it is very, very difficult to penetrate inside, because the amplitude is dying out by 1 by E. It will die out very quickly in good conductors. Are you understanding, everybody? Yes, sir. So this quantity is called skin depth, जो कि बहुत बार कैलकुलेट करने को आ जाता है. ओके तो ये पूरी फिजिक्स समझ आई? Yes. Yes, sir. अब सिग्मा फॉर आइडियल कंडक्टर इज इनफाइनाइट, but for good conductor, please write, for good conductor sigma is greater than epsilon omega. Yes or no? Yes, sir. We have to see this quantity as large quantity. So for this quantity to be large, sigma should be greater. So that means charge density also depend on the I mean good conductor or bad conductor also depends on
the frequency that is incident. हो सकता है किसी frequency पे कोई good conductor हो और अगली frequency पे वो good conductor ना हो. हाँ, So please write for good conductor sigma greater than epsilon omega. For bad conductor sigma less than epsilon omega. You can also write लिखा? yes sir. You can also prove for good conductors sigma much greater than epsilon omega. So K1 will be equal to K2. Yes or no? भाई ये +1 और -1 ही तो हो रहा है. yes sir. उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. If this quantity is large, how does it matter? 1 करोड़ में से 1 ऐड करो या 1 माइनस करो, कोई फर्क पड़ता है? No sir. So K1 will become K2. So ये जो propagation है, that will become K1 plus I K1. तो ये जो phase है दोनों के बीच में, that will become 1. That means दोनों के बीच का phase जो होगा, that will become pi by 4. Are you getting it? So for good conductors, the phase is pi by 4. ठीक है? सबको समझ आ रहा है? yes sir. Yes. तो जब वेवलेंथ लिखना होगा लैम्डा तो कैसे लिखोगे इस केस में? अब ये हटा दो, ये खत्म हो गया गुड कंडक्टर. मैं जनरल बोल रहा हूँ. इट विल बी 2 पाई बाय, बोलो 2 pi by mod की. नो. यही तो बात है, प्रोपोगेशन का वेव वेक्टर k1 है. बस यही गलती कर दोगे. okay sir. yes sir. सो प्रोपोगेशन का वेक्टर कौन है? k1 है. So it will become this. चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और बच रहा है. ओके समझ आ रहा है भाई अच्छे से सबको? Yes sir. सॉर्टन yes sir. Yes sir. सर पुनीत क्लियर हो रहा है? yes sir. सर Yes? सर हाँ. वो जो स्किन डेप्थ है ना, वो D इक्वल टू 1/K2 हो गया. हाँ वो एक बार और बता दो. वैसे आप पहली बार में ही वही पूछ लिया करो, वो ज्यादा अच्छा हैबिट है, बजाय कि पूरी बात दोबारा रिवाइज. इससे अच्छा तो जब बता रहे हैं तभी बोल दो कि सर ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है. वो बेटर नहीं है, टाइम सेविंग है. यस सर. भाई जिस टाइम ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ऑलरेडी वही डिस्कस हो रहा है, तो यू कैन से दैट थिंग. यस it is not possible to revise everything. Okay, so Okay, you should sorry, understand that. No, no, I'm just telling you we should adopt a method just to save our time and energy ना. yes sir. भाई जैसे सपोज अभी अभी तो डिस्कस किया है, I have just discussed सर it वो right now. कभी कभी ना सोचते सोचते तो समझ में आता है. So suppose some wave is there and I told you that it is dying like this e to the power minus k2z. Okay, this is suppose the field profile, it is dying out in the z direction. The wave is traveling like this and ये वो term है जो attenuation cause कर रहा है. So take some value, this is suppose E naught. Take some value when it becomes E naught by E. What is that value? That distance is suppose D. So tell me K2Z, K2D I would say, Z की वो value D है, should become 1 so that E becomes E naught by E. Yes, sir. By this quantity, if it becomes 1, it will become e to the power minus 1. So it will become E naught by E naught by E.
So D will become 1 by K2. Okay, sir. समझ So में this is the distance. So यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज 100 यूनिट एंटर करी किसी कंडक्टर में, ओके, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया स्किन डेप्थ के बराबर, तो यहां कितना हो जाएगी? 100 बाय E हो जाएगी. ओके. Okay. Thank you, sir. Okay. So that means if you have a good conductor, K2 will be large for good conductor. So D will be very small. That means very, very quickly it will take 100 by E value. So that means very, very early it will be finished. Okay. Yes, sir. Sure. Anything else, Vai? Okay, then. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.